चलो अच्छा, एक बात बताएं, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? I think it was ASCII code, and why the size of ASCII. Why the size of character is 1 byte? Scan function and comma. Okay, yeah, that we have done. And did we discuss anything about multiple language representation? Function of comma, we were going to discuss. I left that. Fine, that's okay. But did I discuss anything about what about the other languages? Like in ASCII, we can use only say English and क्या था हिंदी लैटिन दैट यूनिकोड किया था हम लोगों ने, कन्वर्शन ऑफ यूनिकोड किया था. हाँ अच्छा, did we discuss unsigned and signed, or we did not discuss that? Recording in progress. Did we discuss unsigned and signed? Signed integer, unsigned integer? We have done it. Oh yes. Okay. Comparison of signed and unsigned also, we have done it. Now both the groups are running parallel. If I have discussed, I've discussed it everywhere. Fine, great. So now we will, comma operator I did not discuss in one class. Fine. So use of comma operator. Like why I told you that you should not write a comma in a scanf. I think in one section I've discussed, one I've not. So I'll take few minutes time to complete it only. So comma operator, it works from left to right and returns the rightmost operand's value. Okay. Next, it has lowest priority. It has got the lowest priority. I'll keep the video off. I think that will give me a little more space. Anybody else whose video is on, kindly switch it off. Somebody's video is on. So now in this concern, let's take an example of say, I'm writing int a equal to 10, comma 20. Then what is the value of a? What is the value of a? Please respond. Okay, few students are telling 10, few students are telling 20. Now see, in this case, what we have written, okay, many of you are telling 20. Error, no, error will not come. Okay, fine, sun lo. Now see, when we write like this, no, this is divided into two parts actually. So here what happens when we write a equal to 10, when we write a equal to 10, this one, okay, this one, a equal to 10.
This becomes one operand and this becomes the other operand for the comma operator. Fine. So when you're writing int a equal to 10, so this a equal to 10 is 1, 20 is another. Why? Comma has the kya likha hai? Lowest priority, right? So then this is 1, this is 2. So how much value will be assigned to a? 10. So in this case, a is 10. In this case, a is 10. Got it? Recording First in one progress. is, I say a equal to 10, comma 20. In this case, the value of a becomes 10. Why? Because equal to has more higher priority. Fine. But in this case, as the comma is taking precedence here because it's put within parenthesis. So in this case, the value that is right to left. So it will evaluate right to left in this case. So it will evaluate in this case when I'm writing int a equal to 10, comma 20. Within parenthesis, it will be evaluated from right to left and return the rightmost operand's value. Okay, so in this case, how much is the value? 20 is the value that is getting assigned here. Fine. So now that means here how much we are going to get? We get the value of a equal to 20 as comma works. Is it clear now how this works? Okay, now let's see why I was telling you that you should not do this in case of a scanf. So what happens when we do scanf? Like, see, do you know how it works when we like how a keyboard works? So in this case, what happens? We have say this is the keyboard. Okay, this is the keyboard, and from the keyboard, this keyboard is a peripheral device, right? It is connected to your system. So in where all the input data will be getting stored. So keyboard is a device. So for this device, we have dedicated a memory area. This area will be holding whatever we input through the keyboard. What this is told? Any idea? This is called a buffer. सबने सुना होगा, हाँ? Scanner class, buffer class पढ़ा है ना आपने? So what is a buffer? A buffer is nothing but, what is a buffer? A buffer is a temporary memory area. यहाँ लिख देते हैं. A buffer is a temporary memory area associated with all IO devices. Okay, Mane, for keyboard you have its own memory, for video you have its own memory. How it works? Now say if I have a say I have a monitor here. Okay, I have a monitor here where we need the data output to be printed. In this case, what will happen? Any data, say this is my program. Okay, this is my program. Now my program will be reading data from here.
थ्रू होम, थ्रू स्कैनफ, जो भी आपका इनपुट फंक्शन है, हम लोग स्कैनफ यूज कर रहे हैं. Okay, now similarly my program writing data, there is another buffer like this. For whom this buffer is? This buffer is for the monitor, right? So this is the video buffer, this is the keyboard buffer, this is the video buffer. So यहाँ से that output यहाँ पे जाएगा. समझ में आ रहा है? Now whatever data you are writing here, what will happen? This data, these ones and zeros will be getting stored in the buffer like this. Clear? Now what happens? How a scanf works? We write like this. We write scanf. Let me type. कुछ बीमारी हो गया इसका. So say I'm writing scanf. Then I'm writing percentile d, percentile. Suppose हमने ऐसा लिखा percentile d. Then यहाँ पे percentile d, दो नंबर हमें लेना है. Okay? Ampersand of x, ampersand of y. Now for easier understanding, let me draw a buffer here to show you all how it works. Something like this. Okay, something like this. So now what happens? Could you understand, Satvik? So the data goes here to the buffer. From here, the program will read. Now, suppose I'll show you a smaller area. So suppose this is 1 percentile d is reading, suppose this much. Okay. Second percentile d will read the next one. Got it? Now the first percentile d that you are getting, this will be read by this percentile d up to the x variable. Suppose this is your variable x. This is your variable x, and this is your variable y. Take. So now this will come, this x will get updated here. Similarly, the next one is getting read here, and this will be going to percentile y. Percentile y माने ये यहाँ पे अपडेट करेगा एक्चुअली. समझ में आ रहा है सबको? तो अगर ये यहाँ पे 10 आपका रीड करता है, तो ये 10 यहाँ से रीड होके कहाँ आएगा? परसेंटाइल डी में आएगा. कहाँ पे जगह x, तो यहाँ 10 आना चाहिए. सिमिलरली ये अगर 20 रीड करता है, तो ये y में आना चाहिए 20, और यहाँ पे आपका 20 आना चाहिए. आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सो द बफर पॉइंटर दैट वाज हियर, ये पहले का पढ़ लिया, पहला इंटीजर पढ़ लिया. अब ये कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, फिर नेक्स्ट इंटीजर पढ़ेगा. समझे? अभी ये एंड में चला गया, अभी उसके पास और कुछ नहीं है. लाइक सपोज आई हैव गॉट 2 बुक्स ऑन द टेबल, सो 2 people आई कैन गिव. उसके बाद मुझे फिर से जाके लाना पड़ेगा ना. समझे?
अच्छा, now let's see what happens if I put a comma. This scenario is clear to everybody. Now see what happens if I put a comma. To the same thing, if I put a comma, what happens now? See, ये सेम डेटा है, हम इसको अलग से लिखते हैं. Okay, let me write it here. ये सेम डेटा है. Okay, now here this is the thing that we are reading. Got it? Now we are तो फर्स्ट 2 बाइट यहां से आया इधर, नेक्स्ट 2 बाइट इधर से आया इधर. अब आपने स्कैनएफ को कैसे लिखा है? हमने स्कैनएफ को कुछ इस तरीके से लिखा है. आई हैव रिटन स्कैनएफ परसेंट आईडी, एक कॉमा डाल दिया, फिर लिखा परसेंट आईडी. दिस इज गेटिंग चेंज टू समथिंग, परसेंट आईडी. ओके, अब हमने यहाँ पे दे दिया ampersand x एंड ampersand y. फाइन, ये मेरा x वेरिएबल, ये मेरा y वेरिएबल. नहीं, गुरमान स्पेस देने से नहीं रन करेगा, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग अ स्पेस इट विल ट्राई टू रीड अ स्पेस देयर, बट योर स्पेस इज नॉट देयर. So it is doing a continuous, whatever is written inside that, it is trying to read it. Would you understand? आपने परसेंटाइल डी लिखा तो उसने 4 बाइट 2 बाइट जो भी है आपका साइज ऑफ इंटीजर पढ़ लिया उसने. देन आपने स्पेस दिया, so it will try to read space from the buffer, so that will create a mismatch. वही हम आपको इधर दिखा रहे हैं. Like when I'm writing this percentile d, how the comma operator works? Tell me how the comma operator works. Left to right, isn't it? Comma operator works from left to right, returns the rightmost expression. That means in this case also this will work from left to right. Okay, left to right पर पहले percentile d इसने ये रीड कर दिया, but will it return? No. Why? Because comma works from left to right and returns the rightmost expressions value. So ये और इसको return नहीं करेगा. यहाँ पे क्या कर रहा है? Reading, immediately returning, reading, immediately returning. Got it? But here this is one operation because it's a comma operator. A plus B. It's a single operation or not? ए अलग बी अलग थोड़े ना है. ए प्लस बी रिटर्न करेगा एग्जैक्टली द सेम वे. ए कॉमा बी होने पे दिस इज ऑल्सो सिंगल ऑपरेशन जहां पे ये आपको बी रिटर्न करेगा. क्लियर? सो सिमिलरली व्हेन वी आर राइटिंग दिस परसेंटाइल डी कॉस्ट वन, समझ में आ रहा है? रिटर्न द फर्स्ट वन. तो उसने पहला परसेंटाइल डी पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ लिया? 10 उसने पढ़ लिया. गॉट इट? फिर उसने सेकंड परसेंटाइल डी पढ़ा, ये आपका सेकंड परसेंटाइल डी. यहाँ पे इसने कितना पढ़ा? इसने 20 पढ़ लिया. अब रिटर्न क्या करेगा? राइट मोस्ट एक्सप्रेशंस वैल्यू, ये वाला रिटर्न करेगा. ओके, तो ये जब रिटर्न करेगा तो पहला कौन बैठा है? हु इज गोइंग टू गेट इट? दिस वन. दिस इज द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू गेट इट. सो x विल गेट 20. क्लियर? एंड दिस ऑपरेशन गेट्स कंप्लीटेड बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं. As this operation gets completed, y is not going to get any value. समझे? मीन्स मैंने बुक 1 लिया, कॉमा ऑपरेटर है, फिर बुक 2 लिया, फिर जो क्यू में पहले खड़ा था उसको बुक 2 मैंने दे दिया. सो नाउ मेरे टेबल में और कुछ नहीं रहा बिकॉज 1 is overwritten by 2 already. So now what y will get? This y will get a garbage value. ये आप लोगों ने लैब में जब किया होगा तो दिस बाय मिस्टेक मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस. सी जो कर रहे हो अभी कौन से लैब में? Space it will run if and only if you have put a space while entering the data. आपने पक्का 10 और 20 दो भी जो ऐड कर रहा ना उसके अंदर एक स्पेस आपने लगाया होगा, तब जाके वो लेगा. क्योंकि जब इनपुट हम लोग ले रहे हैं, इनपुट में ये मैंने 10 दिया, ठीक है, रुको यहाँ लिखते हैं, ये मैंने 10 दिया. सपोज मैंने लिखा स्कैन,
परसेंटाइल डी स्पेस दे दिया, फिर परसेंटाइल डी ऐसा करके आपने लिखा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर राइटिंग द इनपुट, हमने 10 दिया, स्पेस दिया, फिर 20 दिया, तो 10 इसको रिलेट करेगा, ये जो स्पेस है ये इसको रिलेट करेगा और 20 इसको रिलेट करेगा. सो टू लर्न विदाउट एनी प्रॉब्लम. Similarly, you write one A here. So you have to write one A here, then only it will match. Do you understand? So आपने जब enter किया होगा डेटा उसके लिए, you must have put a space in between. Otherwise it will never run. Because logic मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे run करता है. So is it clear with all of you now why we should not use a comma operator in scanf? Print में we can use because whatever we type, everything gets printed there. But it should not be the case with the scanf. Okay. So now we are done with this. We have already discussed the signed unsigned part of character. Now let's switch over to integer type. Did we start integer? Try it and tell me next class that you are trying to put percentile D without any space, and with a space, you are putting a space here, and while entering the data, you will just write 10, 20 continuously. See what happens then, whether it is reading or not. Because when you're writing any data inside scanf other than the format specifiers, it tend to read the same data from the buffer. Samantha, what you need me to repeat? Want me to repeat the whole class that I've taken since last half an hour, or a particular portion, or the space part? What? Space part. Should I clean the screen, or अच्छा यहाँ पे जगह है, let me know. Please put all your doubts together so that I can clear it at once. No, this online, compiler, it is taking space continuously. Space, there is no problem. It will discard it, that I was seeing also. Let me try it out with any other character, then let's see. Then I'll share it with you. Yes.
I'll share the screen with you all to show you something. If it is a space, normally, see, when we enter, is the screen visible? Now see what happens here. I have, let me just take it out and just put a space here, right? Now the problem is we cannot enter data without that. Like, see, I'm running this, fine. Now in the input, I don't want to give any space in between. It's not possible now, because if I write something, 10 I'm writing, 20 I'm writing, this is a single integer. So we cannot write like that. So we have to put a space like 10, 20. So it is coming automatically. We can check another thing like अच्छा एक काम करती हूँ, फिर वो चेक करते हैं हम लोग. यहाँ पे ना हम लोग स्कैनर पे एक a डाल देते हैं, ठीक है? Let's put any other character than this, say a, like this. Now I want to run. So if I want to run, it will expect data, 2 data. So I'm writing 10, then I'm writing 20. See the output? Now why this is coming? Because it is trying to read first data 10 4 bytes, then it is trying to read this is 1 byte a, right? So with that again continuous 3 bytes. It's reading byte by byte. Do you understand? For integer, it is reading continuously 4 bytes. Somebody was telling me to explain the box part. I'll explain that. Is this visible to is this दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये जो बफर है ना, दिस इज वेयर द डेटा गोज, ठीक है? ये मैंने जो 1020 लिखा, ओके, ये मैंने जो 1020 लिखा, ये बफर में कंटिन्यूस जा रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? सो यूजिंग फर्स्ट 4 बाइट्स, यूजिंग द फर्स्ट 4 बाइट्स, इट इज गोइंग, जैसे मैं 10 लिख रही हूँ आपके रेफरेंस के लिए, सो आई एम राइटिंग अ 10 हियर. This is the first 4 bytes. Do you understand? उसके बाद ये next 4 byte में क्या लिखा होगा? 20 लिखा होगा. 20 in the next 4 bytes, right? Next 20 in the next 4 bytes. So ये next 4 bytes read जब कर रहे हैं, scanf हम लोग क्या read कर रहे हैं? percentile d. तो first letter 10 आता है. ये 10 किसके पास है? आपका a के पास, इधर आ गया, ठीक. अब भी उसके बाद क्या लिखा है? 1a लिखा है. So it is trying to read a from here. It is trying to read a from here, getting me? But it is not getting that. So what it does, एक बाइट वहां पे उसका चला गया, तो यहां से 3 बाइट, यहां से 1 बाइट, ये टोटल मिला के नेक्स्ट परसेंटाइल डी पड़ेगा. Is it making sense to you all? Karan Raj, you wanted to explain the box part again? समझ में अभी? हाँ. और बफर कौन पूछ रहा था मुझे? दीपंकर गुप्ता. बफर समझ में आया? बफर है आप ना जो इनपुट एक्सेप्ट करते हो उसको एक गोडाउन जैसे प्लेस में रखते हो, कंटिन्यूस आरए जैसा, समझे? ये जो 10 है ये ऐसे थोड़ी ना होगा, ये कुछ 0 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे करके होगा, 1 0 1 0 ऐसे होगा, समझे ना? तो अगर हमने पूरा, ये 32 बिट में है, तो पहले 4 बाइट हमने पढ़ा, तो व्हेन आई रीड द 4 बाइट्स व्हाट आई गेट 10. Got it? Next similarly कुछ 0 0 0 0 1 ऐसे कुछ 0 1 0 कुछ होंगे यहाँ पे. So what it will do, परसेंटाइल a लिखोगे तो इसका क्या मतलब है सत्य प्रतीक? परसेंटाइल a तो कुछ है ही नहीं. पर स्कैनफ में आप अगर लिख रहे हो तो बफर में वो मैच कर रहा है ना, तो बफर में क्या हो रहा है? आपका परसेंटाइल डी 4 बाइट डेटा, and this a is replaced by nothing. So it is trying to grab I mean 1 byte from here to match a. It's not able to do that. ठीक है, आप देखोगे एक और चीज, रुको. Now suppose I put the input 10, a 20. Now let's see. Now Satya Pratik and all, your doubt is clear? People who were asking me what it is trying to do, could you all got it now? What it is trying to do and why it was a garbage last time? Everybody is clear now? Because it is trying to read 1 byte from here. उसके बाद आपके पास बचता क्या है? 3 बाइट. A is a character, तो वो तो A नहीं पढ़ रहा है. It is trying to get 65.
So it is trying to match one byte with that. So that's why it's lots of garbage values are getting in the other one. Suppose दो पिज्जा हैं, fine, one person is taking a whole pizza, got it? उसके बाद ना एक suppose a pizza is cut into 8 pieces. उसके बाद कहां से ना एक सिंगल पिज्जा का एक सिंगल पीस का बात आ गया है. I have got total 2. ठीक है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल है. इस टेबल में मेरे पास ये एक है, ये दूसरा है. ठीक है, जो ये दो जो हमने मंगवाया था. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में भी सम लेफ्ट ओवर गार्बेज कुछ होगा यहाँ पे. क्या गार्बेज वगैरह हमें तो नहीं पता, कुछ गार्बेज वैल्यूज होंगे यहाँ पे. ठीक है, अब ये जो है दिस इज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. दिस इज अब से 4 पार्ट्स ऐसा कुछ डिवाइडेड है. हर पिक्चर ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होता है. अब जब परसेंटाइल डी लिखते हो, ये पूरा 4 पार्ट ले लिया, एक पूरा पिज्जा उसको मिला. उसके बाद हमने एक ए लिख दिया. ए क्या है, सिंगल बाइट है. का क्या मतलब होता है, इफ इट्स अ सिंगल बाइट, इसका मतलब है आपका ये जो पोर्शन है, ये कोई एक पोर्शन ले लिया होगा यहाँ से, ये ले लिया, समझे. उसके बाद अगर कोई फिर 4 बाइट लेना चाहे तो कैसे लेगा. 4 बाइट अगर फिर कोई लेना चाहे तो ये लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, और यहाँ से गार्बेज लेगा कि नहीं. Could you all understand what I'm saying? तो ये जो सेकंड थर्ड वाला बंदा है, इसको ये गार्बेज वैल्यू मिलेगा कि नहीं, बिकॉज इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट यू वांटेड टू गिव. ओ यहाँ पे एक बाइट सपोज किसी बर्गर का रखा होगा, यहाँ से ले लेगा. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, इट्स गेटिंग ओवर रिटन. एक के ऊपर दूसरा ओवर राइट होता है, तो कुछ लेफ्ट ओवर डेटा हमेशा रह जाता है बफर में. मतलब ये जो 1020 आपको दिख रहा है ना, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ आपके होंगे डेटा. नेक्स्ट आप जब इसके ऊपर 30 लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर ओवरराइट करेगा 30. फिर ये जो गार्बेज था वो रहेगा. फिर 40 लिखोगे तो उसके ऊपर ये 40 चढ़ेगा, ये जो फिर गार्बेज था वो गार्बेज रहेगा. फिर आप बी लिखोगे तो ये यहाँ पे बी चढ़ेगा, फिर जो गार्बेज था वो रहेगा बाकी. Am I clear to everybody? ये बफर होता है. बफर इज whatever is accepted, whatever is given, it is storing directly like an array. Once you do percentile d, ये आपका बफर पॉइंटर. एक परसेंटाइल डी 4 बाइट के आगे लेता है. अब बफर पॉइंटर यहाँ से, अब whatever you will read, it will read from here. ठीक है, फिर आपने परसेंटाइल डी दे दिया, फिर 4 बाइट आगे, अब बफर पॉइंटर इधर, ये पीछे का नहीं पड़ेगा वो. फिर आपने परसेंटाइल सी दिया तो 1 बाइट जाएगा, अब बफर पॉइंटर इधर. फिर 4 बाइट दिया इधर, फिर 4 बाइट दिया इधर, फिर 1 बाइट दिया इधर. ऐसा करते करते जाएगा. नाउ व्हेन यू when again you start the program, this will be again the buffer pointer will be in the beginning. So whatever new data comes, the new data gets overwritten over this. This is what happens. Clear now all of you? जितने लोगों ने डाउट पूछा था, या स्टिल किसी को डाउट है? Nikita, is your doubt clear now? You asked a question that suppose I write percentile d and your data is 1 1 2 2 3, right? Yes, ये हम लोग array में normally discuss करते हैं. तो 1 percentile d somebody has entered, यहाँ पे clear कर देते हैं screen. तो 1 percentile d somebody has entered 2 1 3 3 1 ऐसा एंट्री किया. Okay, so now is it within the range of an integer? Yes, this is one integer. It will go to percentile d and a will give it. So to make your data as 213 and 31, we either press a enter and write it on the next line, or you write 2 1 3 space is a natural terminator in scanf and 31 ऐसे. कैसे गार्बेज वैल्यू मैंने पिज्जा का एग्जांपल देके बताया ना संजीव. My screen is visible or not visible, guys? Then Gaurav, you have some problem, you can log out and log in again. I hope this is clear with everyone. We should go to the next topic then.
Some garbage value, Satvik, I have printed and shown it to you. फिर से करके दिखाती हूँ. If I print भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ना, I give 10, I give 20. See. Even if I give A, B, C, see what values it is getting. Why it is getting these values? I am writing A, B, C for integers. It is trying to read 4 bytes. The input you have given is 1 byte, a space, 1 byte, a space, 1 byte. Got it? Let me just take out this one from here and rerun this. Now I type A, B, 2 वैल्यू दिया. देखो, बिकॉज आपने इनपुट 2 बाइट दिया, वो तो पहले के लिए ही 4 बाइट रीड कर रहा है. Satvik, got your answer? So now we will अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो इसका, अगर आपको कुछ लगे रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज आई विल क्लियर इट एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. Rupesh, A is absolutely not written in the format specifier. So it is, if your data, input data is a match with that, it is simply percentile is a matching. Okay, scanf does a match only. For percentile D tells it that you read 4 bytes. If you write A, it tells it that you read a A. So it is trying to read that constant from there. If it is not getting it, it is trying to extract A value and put the remaining data, pushing it to the next data. That's what it is doing. That is why you're getting a weird number after that. Scanf is written, scan माने क्या? Read करो. तो तुमको हम क्या बोल रहे हैं? एक इंटीजर रीड करो, फिर हम बोल रहे हैं A रीड करो, तो तुम A ही रीड करेगा ना? It's a constant. वो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाया. कॉमा ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो पहला 4 बाइट उसने रीड किया, बट इट इज नॉट रिटर्निंग बिकॉज कॉमा वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो इट रीड्स द नेक्स्ट वैल्यू. तो अब लेटेस्ट वैल्यू क्या रहा उसके ऊपर? ये तुम्हारा वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है जो बफर में से रीड कर रहा है. उसने पहले परसेंटाइल डी में 10 रखा, फिर कॉमा क्या करता है? नेक्स्ट रीड कर देता है. तो यहाँ पे अब क्या आ गया? 20. तो ये रिटर्न क्या करेगा? 20. किसके पास जाएगा? कौन पहले खड़ा है? एक्स. ये इधर एक्स में गया. सूरज, योर आंसर. x becomes 20. y को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये तो खत्म. उसके बाद क्या है? गार्बेज. सो y को मिला गार्बेज. बफर में बाकी वैल्यू क्या है? गार्बेज वैल्यूज है ना. तो गार्बेज से 4 बाइट रीड करेगा. इनफैक्ट यहाँ पे तो रीड ही नहीं करेगा क्योंकि आपने रीड करने को बोला नहीं. सॉरी, यहाँ पे तो आपने रीड करने को किया था कॉमा देके. सो y का जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा आपको मिलेगा. व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल? अ गार्बेज. सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग गार्बेज. I'm repeating. Percentile D, comma percentile D. First read 4 byte. Comma operator works. So next go for the next operand. Next operand is another 4 byte, and it will get overwritten because it is writing in a common area. पिछले केस में क्या होता था? Reading, immediately updating. Reading, immediately updating. But here it will not happen because it will consider the total one to be a single. आपको मैं बोलूंगी A रीड करो, आप A रीड करोगे, मुझे बोल दोगे. B रीड करो, अब B रीड करोगे, मुझे बोल दोगे. मैं आपको बोलूंगी A प्लस B रीड करो, तो मुझे क्या बोलोगे तुम? A प्लस B करने के बाद बोलोगे ना. तो सिमिलरली यहाँ पे परसेंटाइल D माने एक इंटीजर रीड करो. तुमने मुझे 10 बोला,
दूसरा इंटीजर रीड करो, तुमने मुझे 20 बोला तो मैंने उसको 2 वेरिएबल में डाल दिया, तुम जब 10 बोले मैंने x में डाला, तुम जो y 20 बोले मैंने y में डाला। अब तुम अगर बोलोगे मुझे परसेंटाइल कॉमा ऑपरेटर यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, तो एक इंटीजर तुमने दिया, फिर कॉमा के तहत आप दूसरे इंटीजर दे रहे हो, तो 20 मेरे पास क्या रहा 20 रहा, हम उसको किसको देंगे, जो लाइन में पहले खड़ा है x को देंगे, और काम खत्म, तुम चले गए, स्कैनफ खत्म, तो y को क्या मिलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज गार्बेज। क्लियर? बस। So now we will go to the next one. Just give me 1 second. Okay, now integer, now see, when we talk about compilers in C, there are 2 types of compilers, 16-bit compiler and 32-bit compiler. Recent all compilers are 32-bit, okay? But previously 16-bit compilers were also available, like your older systems, till Windows 97, even if Windows, Millennium Edition, Windows 7, till Windows 7 also you got a support. उसके बाद और नहीं हुआ. So this is 16-bit compiler. 16-bit compiler, and the second one that is recent is all compilers are now 32-bit compilers. Okay, what do we mean by 16-bit compiler or a 32-bit compiler? Now tell me something. When we talk about one integer, one character, the size of a character is totally dependent on what? On the input data. As we discussed that the character ranges from 0 to 255. So we understood that 255 will require 1 byte. So the size of a character is 1 byte, right? But in case of integer, the input is infinite, minus infinite to plus infinite or not? Please respond. When we talk about the range of data in character, it is limited. But when we talk about the range of data in integer, is it limited? It's minus infinite to plus infinite, right? So if it is that, then how much memory will be allocated? Because infinite cannot be stored anywhere. You don't have a sufficient space to store infinite. So there has to be a limit. So the limit is from which end now? So it's not from the data end anymore. In character, the limit was from the data end. But here the limit is from the system end. Got it? Because an integer has to be processed at once. अगर हमने लिखा 12,345 plus 9,765, it has to be added in total. You cannot write 5, 5, 1, 1, 2, 2. ऐसा करके काम नहीं कर सकते. You need to deal with the entire data at a time. So you need to store the entire data at a time. So who is going to process it? Ultimately, CPU. So it depends on the CPU, that how many bit CPU you have. So you can have a 32-bit CPU, you can have a 64-bit CPU, 128-bit also. But is it the CPU who is working? Who is working here? It's the compiler. अब आपको एक example देते हैं. Suppose you have got a 5-liter grinder, a bigger one. A 5-liter grinder you have. But the vessel that is given in which you pour the things and process, the vessel is given for 1 liter only.
So can we process a 5 liter there? Even though the capacity of the grinder, mixture grinder is 5 liters, can we process 1 liter? Can we process more than 1 liter here? Please answer. You cannot. So that is what I'm telling. Even though your CPU's capacity, that is the grinder's capacity, is 64-bit or 128-bit, the vessel, that is the compiler, is only 32-bit. So you cannot do that, no? So it will bring it down to the vessel level, that is the compiler level. So what is the size of an integer? If somebody asks, what is the answer? It is compiler dependent. It's only integer, nothing else. Integer is compiler dependent. If it's a 16-bit integer, size is 2 bytes. If it's a 32-bit integer, size is 4 bytes. Because see, character is always less, 1 or 2 bytes. Integer is the capacity, and float and double are multiple of integers only. So there is no tension there if you can define integer. Understood? So if it's a, so if it's a 16-bit compiler, so on a 16-bit compiler, we just write one int. So how do we write int? Percentile D we write, or we write percentile I. Now, a standard integer in 16-bit is 16-bit itself, that is 2 bytes. जो भी उसका capacity है 16-bit माने कितना? 2 bytes. And here it is 4 bytes. Okay. Now, question comes that if I have a 32-bit, the way we are working, and you're trying to enter marks for the students, and what is the highest mark in a particular subject? 100. And how much space it requires to hold 100? 1 byte, because 1 byte is 255. 100 is still less than that. So when 100 is less than that, we absolutely don't require 4 byte for that. So can't we use smaller area? For that, we can request the compiler with short keyword. We can say short integer. So that is, how do we write it? Percentile H. Okay. And short integer in case of 16-bit is 16-bit only. That is the smallest possible. Please do not think short will always make half. Not necessarily. In fact, one integer in 16-bit itself is a short integer. So what is the size of short? Always 2 bytes. What is the size of long? Always 4 bytes in C. In C. C and C++ both. Okay. So this is 2 bytes. And here it is also 2 bytes. Okay. Similarly, suppose I'm trying to find the factorial of a number. While finding the factorial of a number on a 16-bit, आपका 16-bit में अच्छा मैं एक काम करती हूँ. Let me just put the range here. So if it is your 16-bit, 2 bytes or 4 bytes. So in that case, we'll put the range here. Okay. Tell me what will be the range? If it's 16-bit integer, then it will be -2 to the power. मैं पावर ऐसे यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है? Because लिखने में पावर में प्रॉब्लम होगा. -2 to the power 15 to 2 to the power 15 minus 1. है ना? This is for signed. Or let me try out if I can write using this. I'm not sure ये कुछ काम नहीं कर रहा है मेरा. So here for signed, it is -2 to the power 15 to 15 to
2 to the power 15 minus 1. ये है signed का. And if you write unsigned, in that case this will be 0 to 2 to the power 16 minus 1. Okay, ये है आपका unsigned का. This is signed. This is unsigned. सिमिलर 32 बिट में क्या होगा, ये हमने बात किया था लास्ट क्लास, राइट? 2 to the power 31 to 2 to the power 31 minus 1, and in unsigned it will be 0 to 2 to the power 32 minus 1. This is signed, this is unsigned. Understood? This is the range. So ये आपका आएगा ना 32,767, इसका वैल्यू है 32,767. और ये आपका 65,535. मैं साइड में लिख देती हूँ. 2 to the power 15 is 32,768, and 2 to the power 32 is 32 more than 16. Sorry. 2 to the power 16 is 65,000. Okay, this is the range. तो अब से देखो, in this concern अगर हम लोग बात करें तो when I talk about a factorial of a number, when it goes beyond 32,767, it will come in negative or not? It will come in negative. God willing, tomorrow your salary will come negative if I take this. So we need a bit more space. So what should we do for that? We write long. Okay, long कैसे लिखते हैं? Long लिख सकते हैं, long integer लिख सकते हैं. This is percentile L, small l. Long irrespective of compiler is again 4 bytes. Again बोल रही हूँ C में, Java में नहीं. There is no concept of 16 bit in Java. It's always 32 bit. इसलिए वहां पे आपका long 64 bit होता है. समझे? Still, if you need bigger numbers, तो जो आपका Java में long है, वो C में आपका long है. That is percentile LL. ये कितने का है? 16 bit doesn't support it. 32 bit it is 8 bytes. You can have a 16 2 to the power 18 10 to the power 18 इतना तक support आएगा. Long int or long only, anything will do, Sohan, no issues. You can write long int, you can write long, it will read it as int only. Okay. जैसे हमने साइन क्लॉक पढ़ा था in character, similarly here also there is a sign clock. So the data rotates from positive to negative, so that is why the boundary must be taken carefully. ठीक है, those things are the same. Clear? Now we will discuss that why exactly we need this percentile. What is the requirement of this percentile? इतना क्लियर हो गया? Can I get the answers please? कुछ लोग सो गए हैं इसके अंदर. Few people are on the move. Few people have totally left, keeping the system on. Okay, good. Size of short is compiler independent. Satvik, short is available only on 32-bit systems, first of all. And it is not compiler dependent. It's always 2 bytes because size of integer is 4 bytes. 16-bit में short है ही नहीं. समझे ना? The range of long आपका होगा -2 to the power 64, 63 to 2 to the power 63 minus 1 सृष्टि. Similarly, अगर unsigned लोगे तो 0 to 2 to the power 64 minus 1.
ये जितना बिट है हम लोग उसी से तो रेंज ले रहे हैं ना, 4 बिट माने 31, 32 माइनस 1। सिमिलरली तुम्हारा अगर ये 8 बाइट है तो 64 होगा ना। Long range same as double, Sohan. Double has a mantissa and an exponent part. Integer is just a number. Unsigned will be not 2 to the power 15, Jishan. Unsigned में तो आप 2 to the power 15 क्यों ले रहे हो? Because 1 byte is dedicated for signed, है ना? Unsigned है तो 1 bit तो है ही नहीं ना आपका, तो टोटल तो 16 का 16 आपने यूज किया। साइंड होने से हम लोग एक बिट साइन के लिए काट देते हैं, इसलिए 16 बिट में 15 यूजेबल होता है, इसलिए ये सारा रेंज आपका -1 में जा रहा है। मैं 32 होने से 31 31, 16 होने से 15 15। अनसाइंड होने से क्या होगा? अनसाइंड होने से तो पूरा बिट यूज होगा ना, 16 का 16, 32 का 32। समझा? सोहन तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? लॉन्ग रेंज, लॉन्ग में टेक द सेम नंबर ऑफ बाइट्स बट द डेटा रेंज इज नॉट द सेम because it is it has two parts, no? दो इंटीजर को अलग अलग करके क्वांटिटी का एक्सपोनेंट करके रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अच्छा चलो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, नहीं और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डबल के बारे में पढ़ेंगे बट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इंटीजर का पढ़ेंगे। ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए बनाया जा रहा है, इतना डिटेल एक्चुअली इट्स नॉट नीडेड। अच्छा एक बात बताएं मुझे, suppose I create a character variable. We have discussed that we have variable to which we store data, right? And it is based on the range. Suppose I say a character variable char ch and I store 65 to it, right? And I create one integer variable x and store 65 to it. When you try to print using %d, both of them will show 65, ठीक? यहाँ पे अगर हम लोग कैरेक्टर को %c करके दिखाएं तो वो a दिखाएगा, %d करके दिखाएं तब वो 65 दिखाएगा। Whereas when I say this x are 65, I say %d, it will show 65. दोनों का वैल्यू 65 है, ठीक है ना? The only question I'm asking is when we store a character, the way 65 is written to it, is it the same that when we store it into an integer? प्लीज आंसर। आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है आप लिखिए। हम 2 बाइट दो जगह पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बाइट दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बाइट दिखा रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मेरा टैब में आई विल बी एबल टू राइट वर्क, सो दिस थिंग विल नॉट बी प्रॉब्लमैटिक। सेम, अच्छा आप सोचते हो ये सेम होगा, ठीक है? The way integers store the value, is it the same way a character variable stores the value? This was my question. Now some people are telling it's different. I'm trying to create 16 bits. कैरेक्टर में भी दिखाएंगे 16 क्योंकि पैरेलल दिखाना चाहते हैं, इसीलिए। Though it will access only 8 bits in case of C character, जावा होने से तो 16 बिट ही एक्सेस करेगा। और इंटीजर में 16 इसलिए दिखा रहे हैं कि 32 बहुत लंबा हो जाएगा, ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, डेटा तो हमारा छोटा है, so that is why you imagine this 1 to be 16, okay? From next class, can you also arrange at least a few classes from non-hostelers, soft skill and activities going on in our class? We were kicked out of the other class because they had to lock them. Okay, fine. आप लोग एक काम करो सोहन, you please write a mail to CDC, ठीक है? And to make the arrangement. जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, please write the mail to career development cell, ठीक है? To the head of career development cell, you write CDC mail में लिख देना that this is what is happening.
so we can they can speak to the concerned authority to keep the rooms open for you. Okay. Acha. Now see, when this is the memory, huh? Now I'll just divide it into 8 and 8 for our easier understanding. So this is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. अब देखो 65 when we write in case of a character variable, तो एक ही बाइट यूज करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 65 को. So let's say it is 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okay. And here I'm showing you 16-bit. हम लोग उसको आप उसको simply you can extend it to 32. The method is same. Fine. So here, as we have the 16-bit to fill or 32-bit to fill, it will be all remaining data will be filled with 0. ऐसा. तो यही तुम लोग बोल रहे थे कि ऐसे स्टोर होता है. हम कर देंगे. Why it is for non-hostelites? Because hostelites were also told to attend the class from classroom itself, not in their rooms. ठीक है? Now, tell me, this is the LSB. ये सबको पता है. This is the MSB. ये तो एक ही बाइट है ना? So it is here. And here, this is the LSB, and this is the MSB, right? In case of character, there is no problem because this is 1 byte. ठीक है? This is 1 byte. So when this is 1 byte, it will read 65 only. एक काम करते हैं, let's study now. Last 10 मिनट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. कहाँ से आप क्लास अटेंड करोगे? ठीक है? I'll tell Sumit sir to come and sit here so that he can interact with you. हम माइक ऑन कर देंगे. जो जिसका जो प्रॉब्लम है आप एक बार में डिस्कस कर देना. Or you can tell your volunteers also of your group, they can come and put forth your problems to sir, so that can be taken care properly. Okay. And hostelites, we did not want it to like you should go back to hostel, because when you get a bed you tend to sleep. So simple. Classroom में पढ़ने का एक feeling आता है. छोड़ो. Let's go back to this. Is it clear now? This part, character, there is no problem because the entire data is fit into 1 byte and we are reading 1 byte only. And MSB, LSB both are within the same byte. So no problem because the total 1 byte you are reading and it is in 1 byte. But when it is multi-byte data representation, now it depends. अब एक चीज देखिए, हम ना ऐसा कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पे. Okay, I'm writing this. How do you read it? What you are reading? AB. Most of you are reading AB. But if somebody reads it from right to left, it will read BA or not. So it depends on my reading convention, whether I read it from left to right or I read it from right to left. Yes or no? Tell me. So when there is a single data written, आप इधर से पढ़ो, आप उधर से पढ़ो. आप तो A ही पढ़ोगे ना. You cannot read anything else, isn't it? Can you please interact with me by typing? Yes टाइप करने में कष्ट हो रहा है तो खाली Y लिखिए. No टाइप करने में कष्ट हो रहा है तो खाली ये लिखिए. आप yes मैम इतना नहीं लिखने से चलेगा.
खाली y लिखने से भी चलेगा, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू नो, मैं देख नहीं पा रही हूँ ना किसी को। अच्छा, सो व्हेन इट विल बी करण राज 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 बीट में करण कितने तो 0 और 1 होंगे यार? टोटल 8 होंगे, आपने 9 लिख के दिया है मुझे, और आपने जो लिखा है दिस इज नॉट 65, दिस इज 33, read it properly. 1 4 zeros 1, 1 4 zeros 1, 1 5 zeros कितना होता है? 32, तो 1 4 zeros 1 कितना होगा? 33। 64 कैसे लिखते हैं? 2 to the power 6, एक के बाद 6 जीरो। अभी बाइनरी सिखाऊं, ठीक है? So now AB when we are writing this, so that is what I'm telling, when it is a multi-byte data, now depending on your reading convention, please listen to it carefully. This is the answer to why we write a percentile, what is format specifier, why it is required, why do you have a scanner class, ये सारा का आंसर यहीं पे है। तो when we have multi-byte data representation, be 2 byte, 4 byte, 8 byte, whatever, depending on the reading convention of the compiler, it or system. Now compiler तो नहीं read कर रहा है, it's a CPU who is reading. So it can be right to left or left to right. Like we all know that we have two types of system. One is आपका what are the various types of processors we have? Remember? This is reduced instruction set computing. This is complex instruction set computing. Computing computer लोग what is big endian? Then comes your MSB. So the reading is from left to right. Anybody has an exposure to Photoshop? In Photoshop, many a times when we save the things, it will show you that do you save in ABCD format or DCBA format. So this is ABCD format, that is left to right, and this is DCBA format, that is right to left. All Intel group of microprocessors use Little Endian. All Intel processors, and this is normally your either Mac or you can say systems like mainframe, supercomputer and all, they use this big endian format. Little endian mane first it will read the MSB, then it will read the, sorry ulta likh diya maine, extremely sorry. This is M, this is L, this is L, this is M. Okay, ऐसे पढ़ेगा LLSB फिर MSB. This is right to left. Okay, so now if, as I told you, most of the systems that we use Intel group of microprocessors. So if it is Intel group of processors, it will read it from what? Right to left. So if it is right to left, first this will be read, then this will be read, right? So if you write like this, if you read like this, then you'll end up reading what? First this part will be coming, ठीक है ना? So what you get 0 1 0 0 0 0 0 1, okay, and then what you get the other part 0 0 0 0 0 0 0 0. समझ में आ रहा है? So you will be reading 65 or you will be reading a very big number. अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? Because data is coming from the keyboard or from any external device through a USB port. So when it is USB port, USB port is what? Universal serial bus. So serially data is entering. तो serially data जब enter करेगा वो तो जैसे आएगा वैसे ही enter कर जाएगा ना, this format. Naturally जैसे आता है वैसे input हो जाता है इधर.
So when you read something else. So what is to be done? एम्बुलेंस को कैसे लिखा जाता है? उल्टा. माने अगर हम ए बी पढ़ लिखने से आप उसको बी ए पढ़ रहे हो, तो आपको ए बी पढ़ाने के लिए हम बी ए लिखेंगे कि नहीं? If I come to know somebody has a right to left reading scale, in that case, for that person, I should write always in the reverse way, right? So similarly, when we talk about an integer in a, say, little endian system, what it will do, it will first find out what is the underlying system. The underlying system is little endian. So what it will do, whatever is stored, this way it stores the data actually. This way it stores the data. This is the way it stores it. So the data that is coming from the keyboard, when it is scanf क्या कर रहा है? Keyboard buffer से पढ़ के data में डाल रहा है ना? तो कैसे डालेगा? Whatever is written in MSB will be written in LSB. Whatever is written in LSB will come to the MSB. So naturally, when it is going to read it, it will read it reverse. ऐसा रीड करेगा यहाँ से इधर. So when it will read it like this, what it will end up in? It will end up in reading as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. One. So now you got 65. समझ में आया? So do you understand now what formatting is all about? Formatting is reading the data using the proper format. Okay, proper format, like whether the LSB will be read first or MSB will be read first. That has to be taken care of. That is why आपका function का नाम है scanf, printf. Got it? अब पता कैसे चलेगा? 1 बाइट रीड करेंगे, 4 बाइट रीड करेंगे. 4 बाइट अगर रीड करेंगे तो इंटीजर में रीड करेंगे कि फ्लोट में रीड करेंगे. 8 बाइट करेंगे तो लॉन्ग कर रहे हैं कि डबल कर रहे हैं, कौन बताएगा? That is why we have format specifiers. Do you understand? So the one we write as scanf, and the one that we write as printf. Print भी वैसे ही होता है. The one that we write, this is format specifier. Percentile C, percentile D, percentile F, percentile LF, percentile L, percentile L. ये सारा चीज आपका format specifiers है. They specify in which format we are reading. Okay, ये जो F है, ये जो F है, this is formatted. आयो. So when you write percentile, माने format, what is the format? This is the format. This says how many data bytes. Clear? Clear everyone? निश्चय कहां से बताओ. ये देखो, तुम्हारा फर्स्ट बाइट इधर लिखा है, सेकेंड बाइट इधर लिखा है, तो नेचुरली ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, LSB, और ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. इफ इट इज अ लिटिल एंडियन सिस्टम, ये LSB को पहले पढ़ता है, फिर MSB को पढ़ता है. तो व्हाट इट विल एंड अप इन रीडिंग BA. आपका डाटा पूरा उल्टा हो जाएगा ना. जस्ट थिंक दैट हैव यू, अच्छा सुनो एक बात, हैव यू सीन पीपल कमिंग टू योर हाउस टू टेक अ मीटर रीडिंग, इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग? देखे हो? एक छोटा डिवाइस पकड़ के आता है. सो दैट कंटेन्स अ डेटा फॉर 100 हाउसेस. 100 हाउस का मीटर रीडिंग उसमें रहता है. बट डू यू पे द बिल टू देम? यू पे द बिल इन द इलेक्ट्रिक ऑफिस और ऑनलाइन पेमेंट जो भी कर रहे हो, but it has been paid at the server, right? So how the data transferred from the device to the server? That device is a very small one. It has got, इससे पहले आपका ऑर्गेनाइजर नहीं होता था, उसका वैसे एक छोटा सा मेमोरी है.
समझे? तो वहां से एक यूएसबी केबल, सो ये आपका डिवाइस रहा, ये आपका कंप्यूटर रहा, अब उसको एक यूएसबी केबल में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? अब इसमें किसी का हाउस लॉक था कि किसी ने यूज नहीं किया, एक फैन एक लाइट है, उसका 65 यूनिट्स उठाया, ये जाके सर्वर में कैसे स्टोर कर दिया आपने? ऐसे निश्चय देखो, ऐसे आपने स्टोर कर दिया। ओके, नाउ हाउ यू आर रीडिंग? यू आर रीडिंग इन अ लिटिल एंडियन फॉर्मेट, तो नेचुरली ये पार्ट पहले, ये पार्ट बाद में, राइट? अब उस बेचारे का बिल कितना आएगा? यहीं पे हो रहा है आपका 256, और ये तो कितना होगा? 16,000 समथिंग होगा। उस बेचारे का यूनिट्स कंज्यूम्ड विल बी 16,000 समथिंग, समझे ना? 80-90 हजार उसका बिल आएगा, मे भी 1 लाख के ऊपर बिल आएगा। ठीक है, अब ठीक उल्टा सोचो, somebody has consumed lot of electricity और उसका 16-18,000 यूनिट है, वो उल्टा होके उसका आ जाएगा कितना? ओनली 256, ओनली 65 यूनिट। तो वो सिस्को वालों को वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा नहीं देगा, वो लोग उसको पैसा देंगे। क्यों? उसका प्रीवियस मीटर रीडिंग तो बड़ा आया होगा ना, so he has done ओवर पेमेंट। समझे? इट्स बोथ साइड। So somebody is asking that if the integer type is on a RISC system, what happens? Compiler is never RISC or CISC, Pratyush. The system is RISC or CISC. That is what that is why the format specifier is given, who will track the underlying system. If it is a CISC, it does the LSB MSB conversion. If it is a RISC, it remains, it keeps it like that. That is why the format specifier is written. समझे? निश्चय तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? प्रत्युष क्लियर हुआ? So that is why we are keeping it a variable. We write percentile D, percentile C. Otherwise तो हम लोग सीधा उसको फॉर्मेट बना देते ना। अब समझ में आपको आया कि even though the 1 minute. Now, even though the character, I mean, size of integer is 4 bytes, can I have 4 characters, put them together to make an integer? Will it be a proper presentation? Like I'll say A, B, C, D, 4 integers. उसका corresponding value होगा 65, 66, 67, 68, जोड़ दो जो भी value है. Will it come that? Is it a proper way to write an integer? 4 characters putting together, और let's say 65 हमें लिखना है, ठीक है? तो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में A दे दिया. So will it become 65 as an integer if you put all the 4 characters together? Is it the right way to do this? I'm telling, if instead of writing one integer as 65, I will write 4 characters, 0, 0, char continue, 0, A. Will it become an integer, 65? Is it the right way? No. Why no? Because of the formatting. Understood? That is why characters are the only data type which can be accepted by using unformatted functions. जैसे आपने देखा होगा गेट कैर, सुना होगा ना, गेट कैर, गेट ch, अगर लैब में कुछ किए होंगे तो गेट कैर, पुट कैर, ये सारा चीज ये अनफॉर्मेटेड होता है, जैसा है वैसे ले लो, बिकॉज इट इज 1 बाइट. उसको आगे से पढ़ो तो ए, पीछे से पढ़ो तो भी है. But for integer and above, we cannot use unformatted. It has to be formatted. Clear? Okay. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो.
हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, दैट इज रियल नंबर्स. डन. Now real numbers can be represented in two ways. Another also I will write, but that is not the default one. Float. Okay, float. How to represent it? परसेंटाइल f लिख सकते हैं, परसेंटाइल e भी लिख सकते हैं, परसेंटाइल g भी लिख सकते हैं. क्या अंतर है हम बताएंगे बाद में. ठीक है, we can write it in any way like this. What is the memory requirement? Memory requirement is 4 bytes. Okay. स्वागतिका आज थोड़ा मैनेज कर लो और मेल कर दो सीडीसी को. I'll tell your volunteer to come and meet Sumit sir after the class. अभी आधा घंटा और खाली थोड़ा सा bear with us. ठीक है, we'll make some arrangements for you, don't worry. Just room number कौन सा लॉक हो रहा है और रूम नंबर थोड़ा स्पेसिफाई कर देना. So we know that those rooms are available and he will request for those rooms to remain allocated. ठीक है. People who have been moved out of the room so that the rooms can be locked, please note the room numbers and mention it in the mail itself. Or I'll rather say volunteers make a note of all these rooms and send it to sir so that he knows that okay, these rooms are available and they can be made available to you. जो रूम खाली अच्छे को रूम गुड़ा यार यहाँ लिखने से कहाँ मुझे याद रहेगा. तुम लोग अपने वॉलंटियर्स को लिख के दे देना. ठीक है, वो लोग करेंगे. जो जो रूम से तुम लोग बैठे हो ना वो लोग लॉक करने के लिए निकाल रहे हैं, मतलब वो रूम्स खाली हैं. सो वी नो दोज रूम्स आर अवेलेबल. बस उसको अपने वॉलंटियर्स को लिख के दे दो, वो एक साथ भेज देंगे सर. तो दोज रूम्स विल बी एलोकेटेड. ठीक है. अच्छा, now it is taking 4 bytes. Can you tell me what is the difference? And the second one is double. Double को कैसे लिखते हैं? Percentile LF. Okay. Now it is double memory requirement is 8 bytes. Can you tell me what is the difference between a float and a double? What is the difference between float and double? उसका एक वैल्यू होता है जो आंसर आप लोग दे रहे हो. Storing capacity, byte memory space, except the space. What is the other thing? Yes, float is a single precision representation. सब खाली precision लिखा जा रहा है. What is a precision value कोई नहीं बोल रहा है. Whereas double is a double precision. तो सिंगल प्रिसिशन का आउटपुट क्या होता है? हाँ, 7 नहीं है. आफ्टर डेसिमल 6 प्लेसेस. ओके. और डबल प्रिसिशन है आफ्टर डेसिमल कितना? How many places?
Single precision is how many, I mean, after decimal, how many positions you can say accuracy it is going to find. Okay, it's in the difference of 4444. So this is, मतलब क्या जोर से फेंकने लगे हो तुम लोग? हाँ, 14, 15, 8, 10, जिसको जो नंबर याद आया, कोई तो एक होगा, चल मारते हैं। 15 तक लिख दिया। दिस इज आफ्टर डेसिमल। अब धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं, पता चल गया 15 लिख दिया मतलब हायर वैल्यू है। एज एन आफ्टर डेसिमल अगर तुम्हारा सिंगल प्रिसिशन 6 हो रहा है तो इजंट इट अ कॉमन सेंस कि आपका डबल प्रिसिशन 6 से ज्यादा होगा? हाँ, ये 10 प्लेसेस है, कोई तुक्का काम नहीं करेगा यहाँ पे, सारे लोग तुक्का मारा है बैठ बैठ के। दिस इज आफ्टर डेसिमल 10 प्लेसेस। ओके, अच्छा, now when we talk about, we can also have something with a qualifier, that is long double. आपको एक चीज हम बोले नहीं है, बोल देंगे अभी। व्हाट इज स्पेसिफायर, क्वालिफायर एंड मॉडिफायर? लॉन्ग डबल साइज होता है आपका 10 बाइट्स। ओके, ये ट्रिपल प्रिसिशन होता है। सो दिस इज आफ्टर डेसिमल, 4 का डिफरेंस होता है, ऐसे याद रखो। दिस इज 14 प्लेस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने कुछ इस तरीके से लिखा 1 पॉइंट, अच्छा मैंने लिखा कैपिटल ए विद इन कोट्स, व्हाट इज द डेटा टाइप? कैरेक्टर टाइप मैंने लिखा 10, व्हाट इज द डेटा टाइप? इंटीजर। मैंने लिखा 3.4, व्हाट इज द डेटा टाइप? ओके, डबल, all real constants are doubles because system always, this is not default, no, this is something you're writing using qualifier. So when we say double, double is a, I mean, default representation, so it chooses a more accurate data type. So all real constants are double. समझे? Got it? अच्छा, अब एक बताओ मुझे क्वेश्चन। printf परसेंटाइल डी स्पेस दे देते हैं, size of 0.4, size of 3 परसेंटाइल डी है, 4 नहीं, 0.4 f, size of 0.4 l।
float. Point 4 is a real constant, right? It is double. 0.4 F is float and 0.4 L. ये क्या है आपका? This is long double. Got it? तो size क्या होगा इसका? What will be the output? Double का size कितना? 8. Float का size कितना? 4. इसका size कितना? 10. है ना? So रेहान 16 किसका साइज आपने लिखा? आप सुबह स्मिता क्या कर रहे हो तब से तुम लोग बैठ के? अरे कभी चिन्मय 14 16 व्हाट इज दिस? कर क्या रहे हो तुम लोग बैठ के यहाँ पे? When I've written here इतने बड़े बड़े ये मैं यहाँ पे लिखा है किसका साइज कितना है? From where you're getting 16? From where you're getting 14? Can you please tell me? What's the point if you're not listening to what we are saying? कहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिसिंग है वो आपको दिख रहा है और जो डेटा हम लिख के रखे वो नहीं दिख रहा है. Now answer this. Suppose we write, read the question properly and then answer. Float x equal to 0.7. If what will be the output? Hello, because of single precision. Then high. Compilation error, no semicolon. बाबा तुम लोग तो चलते फिरते कंपाइलर हो. अब आंसर दो. When this type of questions are asked, no, do not see whether comma is missing, full stop is missing, semicolon is missing. Straight away concentrate on what will be the output.
Now see, in this particular case, normally we think that x is 0.7. When we compare, it must print hello. So people, as many people who will be, who are writing hello, they think this way. But when we run it, we get the output as high. Now many students are telling that points double. That is why it's comparing a float with a double. So here my question is, if 0.7 is a 0.7, 6 places, and if 0.7 is a double, it is 0.7, then 10 places. What is the difference? दोनों को मैंने स्क्रीन में लिखा है. What is the difference? People who are writing high, they are showing the justification that 0.7 is float, double, and x is float. So we cannot problem here, no? Because even if you extend and fill, you will fill zeros only. So this is this the reason why it is showing hello? आप 0.7 के बाद 5 जीरो डालो, 6 जीरो डालो, 10 जीरो डालो, 100 जीरो डालो, क्या फर्क पड़ता है? The difference is because 0.7 is not 0.7 itself. How much it is? How do you find the binary equivalent of a number, decimal number? We multiply like 0.7 multiplied by 2. How much we get? 1.4. Right? 1.4. So what you take? So this is 0.1. Okay. Then into 2. ये गया into 2. How much you get? 0.8. So this is 0 into 2. पता है तो? 1.6. So this is 1 into 2. Into 2. 0.4. Okay. Into 2. Isn't it again 0.8? Yes. So this is again 0110. So this will be recurring or not? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? 0.7 when converted to binary, you keep on multiplying by 2, right? So when you keep on multiplying by 2, you find a recurring number. देखो 0.5 or 0.0. अच्छा, people who were telling me the reasoning that many students have written the reason double or float. अब same question हम दे रहे हैं एक दूसरे वैल्यू के साथ. आप इसको करके भी देख सकते हो. This is 0.5. This is 0.5. अब मुझे बताओ सेम होगा कि अलग होगा? Here also the answer will be high. कोई मुझे बोला, रेहान बोल रहा था मेमोरी स्पेस ज्यादा है. People were telling double float. This time hello or high? Tell me. So if it is hello this time, then your logic is wrong. That you are telling double float. I mean, the reasoning that you are giving, more space, less space, that reasoning is wrong. Because if that is the case, 0.7 is a double, then 0.5 is also double. Then why it is not happening for 0.5 or 0.0? I write 1.0, it will still show hello. But any number other than 0 and 5 I'm writing. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. For everything, it will show you high. समझ में आया? So when somebody is telling you the answer, no, learn to ask why. And judge the reasoning properly. So what is happening? The case is this is recurring. Now the question you will ask is what happens then if it is recurring? Now if it is recurring, the problem is that, see, suppose I'll say 10 divided by 3.
ये कितना होगा आपका? 10 divided by 3 is कितना? 3.333, राइट? इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई बैक विथ 3 करेंगे, will I get 10 or I get a value little less than 10? This value is little less than 10, right? But if I write 11 by 3, this is how much? Right? If I multiply by 3, you are also it will be 10. But in this case, actually it is a little more than 10, right? So in both the cases, this is never equal. This thing is never equal to 10. You agree or you do not agree? So when we convert, when it's a recurring representation and we do a back conversion, we never reach to the original data. We get a data either a little bit more than the original or a little bit less than the original. Samjhe? So that means if I say 0.7, this is also something like, it can be a little less, like 6.99999, ऐसा कुछ होगा, है ना? और एक 9, तो मतलब it has to be somewhere it is written 8 which is getting converted and it is getting 9. एक minute. हाँ, ठीक है. मीन्स ये क्या हो रहा होगा आपका? This has to be 8 somewhere which is getting rounded up. This is for example we are taking. This may not be the exact value. You understand? It's a very minute difference. So here we are rounding by how many places? We are rounding by 8 by 10 places. Okay, this. Now if I put the same, तो क्या लिखा ये देखो. So ये जो 0.7 है, ये 0.7 ये है. इसको जब हमने फ्लोट में पुश किया तो क्या होगा? फ्लोट क्या करेगा? आप एक बॉटल पानी को एक ग्लास में डालोगे तो नेचुरली इट विल गेट राउंडेड अप ना. तो ये 4 पोजीशन जो है ये आपका राउंड अप हो जाएगा. समझे? तो अगर यहाँ पे सपोज ये 8 है तो ये 9 बन जाएगा. कहीं पे अगर 8 9 यहाँ पे 8 है तो ये 9 बन जाएगा ना, जो भी हो. तो अगर इस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग चेंज करें x में, तो ये तो अगर हम लोग उसको 4.700 बनता है ना, जो कि एक्चुअली 0.70 नहीं होता है. इट विल बी वही 699 ही आएगा एंड दिस विल बी सम मोर वैल्यू. दिस विल मे बी 9988, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा डेटा इसमें होगा. However, in this particular case, x is, this is just a mere example I am showing with some sample data. The exact data, बार बार बोल रहे हैं, exact data will vary. The difference comes because when you round up, it will either be more or be less. कोई भी data देखिए, suppose this is 3.4 and we do a round up, we get 3, right? If it is 3.8 and we round up, we get 4. So when rounding up, you never get the exact value. That is what I want to say, that if it is a 10-digit representation, it's a 6-digit representation. Rounding off is taking place. So when it is rounding off, the data has to be either a little more or a little less, right? So similarly, suppose 0.7 is a little more. Let's say 0.700, like this. And when we write into x, it will be 0.7. Like this. And in this case, x is less than 0.7. So both the cases, it is never the same. Could you understand?
whenever we convert any value other than 0.5 or 0.0 to the decimal to the binary portion, a binary system, it becomes a recurring value. And a recurring value, when represented as a 10-digit accuracy or a double precision and a single precision, quite natural, the value is going to differ by 4 places. So either the value, after rounding off, either the value will be more or the will never be the same. So what we are trying to do, this 0.7 is double representation. This X is the double push to the float. Even if you do the typecasting, nothing happens because the double is converted to float here. So here we are comparing the original double 0.7 with the float value X. That's where the difference is coming. Okay. But what happens in 0.5? When we say 0.5 into 2, 1.0, right? So this is this. There is no recurrence here. As there is no recurring value here, naturally आप उसको 6 में डालो, 14 में डालो, doesn't matter. Who told you Sudhanshu 0.5 will be recurring? तब से तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं. 0.5, 0.1 को छोड़ के और कहीं पे बाकी 0.5 और 0.0 will not work. In this case, it is not recurring. यही तो दिखा रहे हैं यहाँ पे. What I'm showing. और यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्यों था? उसी लिए तो पूछा था. बता तो उसी लिए रहे हैं कि this is not recurring. Understood? So what we need to do? We need to put the data types as same, right? So if you need to put the data types as same, so either you take both of them as double or both of them as float. How to do this? Just make it F. Make it F. So when you make it F, what will happen? Here, 0.7's float conversion will be compared to X. So when 0.7's float conversion will be compared to X, naturally both of them will be the same. So in this case, the answer will be, hello, whereas the answer will be I. समझे? अच्छा, in the beginning of the class, I requested the volunteers to form a group. Volunteers of A section will form a group for A. Volunteers of B section to form a group for B. B section a group. I'm sorry. Volunteers for group A to group A and volunteers for group B will create group B, not section A and section B. Do you understand what I am saying? You have got sections. A to कितना तक section है आपका? What is the last section you have? Volunteer from group A, can you answer? 6 sections. Okay. A1 to A6, right? This is group A. And then B का कितना? B1 to B6. Similarly, this is group B. And under this A1 to A6, you have 6 physical sections, I think. A, B, C, D, E, F, like that. आप लोगों का सेक्शन क्या है? A1, A2 है कि A, B, C, D है? A, B, C, D है. मतलब ये आपका A, B, C, D, E, F होगा. Whatever it is. तो ये जो सुनो,
ये A1 to A6 इसके each of the section having 2 volunteers, right? 2 volunteers, A1, A2, A3, A4, A5, A6, right? A1 का 2 volunteer, A2 का 2 volunteer, ऐसे करके A6 तक 2 volunteer, टोटल कितने हुए? 12 volunteer. समझे? ये 12 वॉलंटियर्स ग्रुप 1 का जो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होगा उसको फॉर्म करेंगे. समझ में आया? सिमिलरली B1 के इसके 2, B2 के 2, B3 के 2, B6 के 2, ऐसे मिलकर टोटल कितने हुए? 12 वॉलंटियर्स. ये 12 वॉलंटियर्स ग्रुप B क्रिएट करेंगे. समझे? हम लोग ये हम लोग हैं. वैसे ही आपका ग्रुप C और D ऑलरेडी बन चुका है. ये हम लोग हैं. ये CDC सेल है, ये मैं हूं. So we will send a message. जो भी मैसेज देना है हम लोग इसको देंगे, इसको देंगे, जिसके लिए जो मैसेज हो इसको देंगे, इसको देंगे. ये लोग क्या करेंगे? रेस्पेक्टिव क्लास ग्रुप पे फॉरवर्ड करेंगे. समझ में आया कैसे काम हो रहा है? We cannot send it to individual sections. It's not possible to maintain that logistic. That is why volunteers are created, and each section दो volunteers at least हैं. Could I make myself clear? WhatsApp group किसका बनना है? Who is the volunteer from 1 to 6? कौन लोग हैं? थोड़ा एक बात बताओ. Yes, only volunteers will be there in the group. निश्चय सिंह, आप कौन से ग्रुप के हो? A5 के हो. समझे? तो जो लोग A1 to A6 के अंदर हो, A से शुरू होता है आपका, तो आप ग्रुप A नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे. कौन रहे? वॉलंटियर्स. समझे? सिमिलरली ग्रुप B का ओनली वॉलंटियर्स. हम लोग वॉलंटियर्स को मैसेज भेजेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है B4 में है, B5 में. सोहन थोड़ा दिमाग लगाओ. B4 B5 टोटल B के अंडर आता है. तो वॉलंटियर अगर ग्रुप B में रहेगा, वॉलंटियर को मैसेज जाएगा तो वो अपने अपने सेक्शन को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है. आप लोग सिविक्स पढ़े थे? हर स्टेट में असेंबली रहता है. समझे ना? हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन रहता है. फिर आपका पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन रहता है कि नहीं? तो जो 2 लोग पार्लियामेंट में होंगे, जो उड़ीसा के लिए किया जाएगा, जो बिहार के लिए किया जाएगा, जो वेस्ट बंगाल के लिए किया जाएगा, वो अपने स्टेट को बोल सकते हैं कि वहां बैठ के उस स्टेट के सारे लोगों को बोलेगा. हाउ डू वी डू द मैनेजमेंट? किसका ग्रुप बनेगा? समझ में आ रहा है? वॉलंटियर्स का ग्रुप बनेगा. आशुतोष रंजन, यू मे नॉट अटेंड द टोटल क्लास. आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. द क्लास इज ओवर. ओनली वॉलंटियर्स शुड स्टे बैक. All the volunteers, please stay back. Remaining, you can leave. Thank you very much. Only volunteers, please stay back. Remaining, everybody leave.